हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपनी न्यू एनसीईआरटी इंग्लिश की कावेरी, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी आई है उसका चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स। सो वीडियो बहुत छोटा रहेगा क्योंकि मैं जस्ट आपको आंसर्स बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि उनका हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी दूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। वैसे मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर्स इसमें लिखे हुए हैं। सो हम लोग इस चैप्टर में जो इन बिटवीन क्वेश्चन हैं उनको भी करेंगे क्योंकि वो भी थोड़े से इंपॉर्टेंट मुझे लगे, इसीलिए मैंने उनका भी आंसर साइड बाय साइड लिखा हुआ है। आप एक काम कर सकते हैं, आप जहाँ पे आंसर्स मैं शो करूंगी वहां पर आप वीडियो को पॉज करके उन आंसर्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, या अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें आंसर्स का तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर्स। सो हमारे क्वेश्चन आंसर्स फर्स्ट वाला जो है, जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उसकी चेक योर अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, सो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक पॉट मेकिंग इज इजी? इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई नॉट? सो उसका आंसर है, पॉट मेकिंग इज नॉट easy. The story shows that it requires skill, patience, and physical effort. It is more than just shaping clay. It involves tradition, technique, and dedication passed down through generations. The craft is demanding, and mistakes can ruin the entire pot, which highlights the difficulty of mastering it. So, this is your first answer. Second is, would Centilla be able to fulfill her dream of becoming a pot maker? Explain. So इसका आंसर यहाँ पर है, yes. Centilla could fulfill her dream because she is determined and passionate about learning the craft. Despite social and emotional hurdles, her persistence reflects the theme of resilience. The story emphasizes that with hard work and commitment, even challenging dreams can be achieved. So this is your answer number second. थर्ड क्वेश्चन है आपका, डू यू थिंक मेसोबा एंड आरनला वुड सपोर्ट सेंटेला? गिव रीजन। सो इसका आंसर है, it is likely that Mazoba and Aranla would support her. The narrative highlights intergenerational transmission of skills, meaning elders often encourage younger ones to carry forward traditions. Their support would stem from valuing the dignity of work and wanting Centilla to preserve cultural heritage. सो ये है आपके चेक योर अंडरस्टैंडिंग, जो फर्स्ट पार्ट वाली चेक योर अंडरस्टैंडिंग है उसके क्वेश्चन आंसर्स। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो पूरा देखो, जहाँ पे मैंने आपको आंसर्स लिखवा रखे हैं आप एक काम कर सकते हैं, वहाँ पे रुक के आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने सेकेंड वाले के बाद में जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स आते हैं उनको करते हैं। सो ये रहा आपका सेकेंड पार्ट के बाद, डू यू थिंक Onula's support helped Centella? If yes, why? If no, why not? So इसका आंसर है yes. Onula's support was very important. Onula encouraged Centilla when she faced doubts and difficulties in learning the craft. His guidance gave her confidence and strength to continue despite challenges. This shows how moral and practical support from family members can make a big difference in achieving one's dream. Second is, Centilla observes her mother making pots. What does this tell about her? So इसका आंसर है, it tells us that Centilla is curious, attentive, and eager to learn. By watching her mother closely, she shows respect for tradition and willingness to carry forward the skill. Her observation reflects patience and determination. These are the qualities necessary for mastering pot making. So ये है इसके दोनों क्वेश्चंस के आंसर। अब हम चलते हैं अपनी मेन एक्सरसाइज की तरफ। This is arrange the following events of the story in the correct sequence. Share your answer with your classmate and teachers. वैसे मैंने इसमें आंसर्स लिख रखे हैं बट आई वांट कि आप एक बार इसको खुद से अटेम्प्ट करना, ताकि आपको पता चले कि आपको स्टोरी कितनी समझ में आई है। सो इसके आंसर्स ऐसे हैं, आप ये देखिए, 4 7 3 1 6 2 9 5 एंड लास्ट में है आपका 8। ठीक है, तो मैंने ब्राइस में बॉक्सेस में आंसर्स के नंबर्स लिखे हुए हैं कि कौन सा सीक्वेंस कब हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 4 7 3 1 6 2 9 5 8। बट आई वांट कि आप इसको देखे बिना एक बार खुद से ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ताकि आपको पता चल सके कि आपको स्टोरी कितनी समझ में आई है। नेक्स्ट वी हैव द मेन एक्सरसाइज। तो अगेन ये जो आपका एक्सट्रैक्ट है इसे आप खुद पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपको केवल आंसर्स बता रही हूँ।
First question is choose the correct reason for the given assertion. The effort in making pots is far greater than returns. तो इसका आंसर A है. The process of making pot baking is quite tiresome and long and one hardly earns much. So this is the answer of first one. इसका आंसर है option number A. Second question है why does Aranla want Centilla to learn weaving? So इसका आंसर है Aranla wants Centilla to learn weaving because weaving is less tiring, more profitable, cleaner and can be done indoors in all seasons. ठीक है. Third question is state one advantage that weaving has over pot making as per the extract. So इसका आंसर है one advantage weaving has over pot making, it takes less time and gives better financial returns. Then fourth is choose the sentence that uses the word handsome in the same way as an extract. तो इसका आंसर है option number B. They will make a handsome profit selling this property. ठीक है. And for fifth one is and the reward. What is the author's purpose of using a question mark here? इसका आंसर है the author uses the question mark in and to reward to emphasize Aranla's frustration and disbeliefs at the meager earnings compared to the hard work. चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ. अगेन ये एक्सट्रैक्ट आप खुद से पढ़ लीजिएगा. विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस ओनली. So first one is complete the sentence with an appropriate reason. Onula feels Centilla's effort at making a pot is clumsy because. इसका आंसर है she was tense and inexperienced which made the clay resist shaping. ठीक है. Second question is choose the correct option to complete the following sentence. Don't worry little one, I shall teach you how to make a perfect pot. This shows that Onula was क्या थी वो? Option इसका आंसर है option number A, sincere and generous. Then third one, which among the following is the effect of a cause? इसका आंसर है first one A. As a result, the clay seemed unable or unwilling to yield the right shape. Then fourth one is Onula fashioned a beautiful pot. Here the word fashioned means. So answer is created. And the fifth one is how might Centilla have felt when she saw the misshapen lump fall flat on the ground? So इसका आंसर है बेटा Centilla might have felt disappointed, discouraged and helpless when she saw the misshapen lump fall flat. So अब आता है हमारा मेन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वी हैव अराउंड 7 क्वेश्चंस. ठीक है, हम लोग करते हैं 7 क्वेश्चंस के आंसर्स. चलते हैं आंसर्स की तरफ. So here we have question answers. First one is describe the process of pot making followed by expert pot makers as observed by Centilla. So the answer is process of pot making by expert potters as observed by Centilla. First is digging clay with a dowel and loading it into baskets. Second, pounding the stubborn clay inside bamboo cylinders to soften it. Third, turning clay into malleable dough. Then shaping the clay carefully into pots. Then drying the pots on a bed of hay and then firing them in a kiln to harden and finish. आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या इवन वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हो. Then second question is what warning was given to Mezoba by village council? Answer number 2 is the council warned Mezoba that he could not deny Centilla the traditional knowledge of pottery. Pot making was considered a collective heritage belonging to the community rather than any individual. Now question number 3. How did Centilla feel when she failed at pot making even after a year of training with her mother? So the answer is she felt disheartened, frustrated and doubtful of her abilities as her repeated failures made her question whether she could not even ever master the art. Now coming towards question number 4. Question number 4 is Onula stood there for a long time as if trying to absorb a new phenomenon. Explain. So answer number 4 is this shows Onula's amazement and realization that Centilla had genuine talent. It was a moment of recognition that a new pot maker was emerging,
something unexpected yet significant. Now, question number 5. The tradition and history of the people did not belong to any individual. What does this symbolize? So, answer is this symbolizes that cultural practices and skills are communal property, meant to be preserved and passed down through generation, not monopolized by one person. Now, question number 6. What is the significance of the concluding line of the story? A new pot maker was born. Answer is it marks Scintilla's transformation from a learner to a skilled artisan, ensuring the continuity of pottery tradition in her community. It is both a personal triumph and a cultural milestone. Now, the last question, question number 7 is what is the role of perseverance in pursuing one's dream? Elaborate with reference to the Scintilla. So, answer is Scintilla's journey shows that perseverance is crucial. Crucial why? First is despite repeated failures, she kept practicing. Second, she sought guidance from Onula and learned patiently. And third, her persistence turned passion into skill, proving that dedication and resilience lead to success. तो यहाँ पे हमारे ये 7 के 7 क्वेश्चंस के आंसर्स और बाकी सारी एक्सरसाइज खत्म होती है आपके चैप्टर की। कल हम मिलेंगे अब अगला नेक्स्ट पोएम के साथ, पोएम के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे बताइएगा, बट मुझे लगता है चैप्टर पढ़ने के बाद इनको हिंदी में समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए रहेंगे, आपके पास नोट्स की तरह रहेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना, लिखना, जैसा आपका मन करे वो आप करना, और इसमें आप मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा हुआ है वही आप लिखो, आप पढ़ने के बाद अपनी लैंग्वेज में भी उनको लिख सकते हो। सो बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं कल नेक्स्ट पोएम के आंसर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।